Hi everyone. Today, today we are going to represent how to create those sentences which are used to represent possession. तो हम लोगों ने possessive sentence interrogative plus negative तक बनाना सीख लिया. Today we are going to how to create in WH format. WH words interrogative. At first WH words and then do and then have and you can also use this format WH words have or has both format are correct but this format is used most, this is used less. ये जो फर्स्ट फॉर्मेट इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है इसका कम. बेहतर रहेगा कि आप इस पर ही प्रैक्टिस करें. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तुम्हारे पास तुम्हारे पास मेरा पैसा क्यों है. तुम्हारे पास मेरा पैसा क्यों है. WH why do या does. Why do you. If the subject is he she it we select does but here is the subject you, that's why we choose do. Why do you and then have. After subject have. Why do you have my money. Why do you have my money. You can also write in this way. Why have you my money. Both is correct. One is used most. तो इस सेंटेंसेस और इस पसेसिव फॉर्मेट पर भी आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं. चलिए एक बार हम और आप भी मिलकर प्रैक्टिस कर लेते हैं. How do you have my money? How do you have car? When do you have common sense? Where do you have your dress? Why does she have my clothes? Why does she have my things? Why does he have my mobile? Why does he have their telephone? Why do they have mine? Why do they have my books? Why do they have your money? Why do they have his cycle? Why do they have her car? So many more you can create sentences in this way. Let's how to make it in negative form. If you want to make it negative form, you just write not after subject, but here is two ways. नेगेटिव फॉर्मेट बनाने के दो तरीके हैं, तो हम दोनों को समझेंगे. देखिए WH and then do, does and then subject
not have at last object at the end question mark. You can also write don't और doesn't. जब आप डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं तो नॉट डू के साथ मर्ज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको नॉट को अवॉइड करना होगा। एक और तरीका है, नॉट इसे अगर आप चाहें तो शॉर्ट वे में यहाँ हैवेंट कर सकते हैं या हैजंट लिख सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तब फिर आपको यहाँ से नॉट को अवॉइड करना होगा। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स हैं। उन लोगों के पास दिमाग क्यों नहीं है? Why do they not have mind? You can also say don't they, फिर यहां से नॉट को आपको अवॉइड करना होगा। Why don't they have mind? पूरी तरीके से ही लिख देता हूं, why don't they have mind? या फिर आप इस फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं, आपको पता ही है। तो इस पर हम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस भी करेंगे। नीचे का साफ दिख नहीं रहा है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा कैमरा को डाउन कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, बस पोज करके आप राइट कर लीजिएगा मैंने किस तरह लिखा है। अब इन पर मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं। हाउ डोंट यू हैव माई बुक? Why don't you have his car? Why don't you have time? How don't they have time? How doesn't he have mind? How doesn't he have my money? How doesn't he have time? How doesn't he have great player? How doesn't he have my cell phone? How doesn't he have anything? So in this way you can create multiple sentences. That's very easy. That's enough for today. Until next time.